Hello dear learners, मैं डॉक्टर संगीता चौधरी and I welcome everyone to my lecture class. इस क्लास में मैं डिस्क्राइब करूंगी about ARDS. What does ARDS means? ARDS stands for Acute Respiratory Distress Syndrome. Okay, Acute Respiratory Distress Syndrome. As the name suggests, it is an acute condition, okay, sudden in onset, and it is a syndrome characterized by respiratory distress. अभी respiratory distress है तो क्या होगा? पेशेंट को severe breathing difficulty होगा. Acute onset severe breathing difficulty. Okay. So ARDS is a clinical syndrome of severe dyspnea of rapid onset, hypoxemia and diffuse pulmonary infiltrate leading to respiratory failure. So the ultimate fate of ARDS is respiratory failure. ARDS क्यों होता है? It may be as a result of direct lung injury और indirect lung injury होकर भी acute respiratory distress syndrome हो सकता है. अगर एपिडेमियोलॉजी देखें तो एपिडेमियोलॉजी में annual incidence is as high as 60 cases per 1 lakh population. Okay, 10% of all ICU admissions involve patient with ARDS. ICU में जितना भी patient हम admit करते हैं, quite a high number, that is 10% of all ICU admissions involve patient जिनको acute respiratory distress syndrome हुआ है. Causes. Talking about the causes of acute respiratory distress syndrome, causes को हम direct lung injury और indirect lung injury में divide कर सकते हैं. Direct lung injury में क्या क्या होता है? Direct lung injury may be because of pneumonia. Pneumonia is the infection of the lung parenchyma. Aspiration of gastric contents into the lungs. Pulmonary contusion. Okay. Parenchymal injury, near drowning, okay, toxic inhalation injury because of inhalation of some toxic fumes, okay, ये सब है causes of direct lung injury which leads to development of ARDS. Indirect lung injury देखें तो sepsis, severe trauma may lead to multiple bone fractures, फ्लेल चेस्ट, हेड ट्रोमा हो सकता है, बर्न हो सकता है. ऑल दिस में अफेक्ट द लंग इनडायरेक्टली. मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूशन से, ड्रग ओवरडोज से लंग इंजरी हो सकता है. पेनक्रियाटाइटिस में ऑल्सो इनडायरेक्टली कॉज ARDS. पोस्ट कार्डियोपल्मोनरी बाईपास. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर ARDS. ओके, देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया फ्रॉम विच हम ARDS diagnosis कर सकते हैं. Onset is acute within 1 week of a clinical insult or new or worsening respiratory symptoms. ठीक है, onset acute होना है and that is within 7 days of a clinical insult. ठीक है. Severity हम कैसे डिसाइड करते हैं? Depending on the oxygen level. Oxygenation हम severity डिसाइड करते हैं. Okay, it can be divided into mild, moderate and severe ARDS. If it is mild, then PaO2 and FiO2 ratio will be in between to 200 to 300. Okay, it will be more than 200 but less than or equal to 300 millimeter of mercury. Moderate है तो it is in between 100 to 200. ठीक है. If it is severe, then it is less than or equal to 100. ठीक है. Chest X-ray में क्या दिखाई देगा? Chest X-ray में there will be bilateral opacity. Bilateral involvement होता है typically, okay, not unilateral. Bilateral opacity consistent with pulmonary edema, not fully explained by effusions, lobar or lung collapse और नोड्यूल्स. पल्मोनरी एडिमा में जैसे होता है वैसे बायलैटरल ओपेसिटी दिखाई देगा एंड देयर विल बी नो
आइडेंटिफाइबल इफ्यूशन नहीं रहेगा. प्लूरल इफ्यूशन से भी ओपेसिटी हो सकता है, बट देयर विल बी नो प्लूरल इफ्यूशन. कोलैप्स का कोई साइन नहीं रहेगा, लंग कोलैप्स का, और कोई नोड्यूल्स भी नहीं रहेगा. ठीक है. एब्सेंस ऑफ लेफ्ट एट्रियल हाइपरटेंशन. समटाइम्स लंग इंजरी होता है बिकॉज ऑफ लेफ्ट एट्रियल हाइपरटेंशन, जिससे बैक प्रेशर क्रिएट होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में. अगर लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा है देन देयर विल बी क्रिएशन ऑफ अ बैक प्रेशर इन द पल्मोनरी वास्कुलेचर. लेकिन यहाँ पे इन दिस ARDS देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ लेफ्ट एट्रियल हाइपरटेंशन. Hydrostatic edema is not the primary cause of respiratory failure. If no ARDS risk factor is present, then some objective evaluation is required, like echocardiography, to rule out hydrostatic edema. Okay, echocardiography हमको करना है to rule out the increase in left atrial hypertension. Okay, so that there is no hydrostatic edema in the case of acute respiratory distress syndrome. So these are the criteria by which we can diagnose a case of acute respiratory distress syndrome. Onset, acute onset within 1 week. There will be decreased oxygenation, and depending on the oxygenation, we can grade it into mild, moderate and severe grading. Chest X-ray देखना है. Chest X-ray में bilateral involvement होगा, and importantly, the involvement starts from the lower zone. Okay. So bilateral involvement in the chest X-ray, and there should not be any collapse or nodules or any pleural effusion. On echocardiography, there should be absence of left atrial hypertension. So these criteria should be fulfilled to call a person as having acute respiratory distress syndrome. Pathophysiology. पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म बिहाइंड ARDS? क्यों डेवलप होता है ARDS? नॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीकिंग इनटू द इंटरस्टिशियम इज ड्रेन्ड बाय लिम्फेटिक सिस्टम. नॉर्मली भी इंटरस्टिशियम में स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीक हो सकता है, बट दैट फ्लूइड इज रैपिडली क्लियर्ड बाय द फंक्शनिंग लिम्फेटिक सिस्टम. ARDS में क्या होता है? ARDS में देयर इज डिफ्यूज एल्व्यूलर इंजुरी. ओके, एल्व्यूलर में दो तरह के न्यूमोसाइट्स होते हैं, दो तरह के लाइनिंग सेल होते हैं. वन इज टाइप 1 एंड द अदर इज टाइप 2. जो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं उनका इंजुरी ज्यादा होता है इन ARDS. ठीक है. डिफ्यूज एल्व्यूलर इंजुरी रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ साइटोकाइन्स. जब भी there is injury, then there will be the inflammatory cascade will start. Okay, there will be release of cytokines, and some of the cytokines जो है they will attract the neutrophils. There will be recruitment and activation of neutrophil. जब neutrophil activated होता है तो ultimately neutrophil will release the granules. So thereby there will be release of toxic mediators like ROS and proteases. ROS stands for reactive oxygen species. Okay, so ROS release होगा which is a potent, which results in oxidative injury, oxidative stress. Capillary endothelium and alveolar epithelial damage होगा, and there will be loss of protein into the interstitium. जब एंडोथेलियल सेल डैमेज होता है एंड एल्व्यूलर एपिथेलियल डैमेज होता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा, एंड देन जो प्रोटीन है ब्लड में से वो लंग इंटरस्टिशियम में चला जाएगा. ओके, प्रोटीन लॉस इनटू द इंटरस्टिशियम ऑफ द लंग. ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोटीन देयर विल बी लॉस ऑफ ऑन्कोटिक ग्रेडियंट. ऑन्कोटिक ग्रेडियंट लॉस हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ऑन्कोटिक ग्रेडियंट जो फ्लूइड है इंट्रावास्कुलर स्पेस में, जो फ्लूइड है दैट विल गो इनटू द लंग इंटरस्टिशियम. लंग इंटरस्टिशियम में इतना ज्यादा फ्लूइड हो जाएगा दैट इट विल ओवरवेलम द नॉर्मली फंक्शनिंग लिम्फेटिक सिस्टम. नॉर्मली आई से थोड़ा थोड़ा फ्लूइड लीक हो सकता है इंटरस्टिशियम में, बट दैट इज रैपिडली क्लियर बाय द लिम्फेटिक सिस्टम. लेकिन ARDS में क्या होता है? देयर इज लॉस ऑफ प्रोटीन, देयर इज इन्फ्लेमेटरी कास्केड होता है, साइटोकाइन रिलीज होता है, न्यूट्रोफिल केमोटैक्सिस होकर न्यूट्रोफिल आता है एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन. अल्टीमेटली देयर इज इंजुरी टू द
endothelial cells lining the capillary, and because of injury into the endothelial cell, there will be leak of protein from the blood vessel inside the interstitium, lung interstitium. अभी lung interstitium में protein जा रहा है तो oncotic gradient will be lost. Loss of oncotic gradient will result in fluid pouring into the interstitium. इतना ज़्यादा fluid हो जाएगा interstitium में कि lymphatic system will not be able to clear all the fluid. Okay? Epithelial breakage होगा and alveoli gets filled with edema fluid and cellular debris. Here is a picture we have. Here we can see a normal alveolus on the left hand side. This is the normal alveolus. Okay. In the right hand side we have an alveolus which is seen in a case of ARDS patient. So if we look at the normal alveolus, okay, normal structure, if we see, this is an alveolus, okay, inside the alveolus. ये जो है lining cell, alveolar lining cell, they are the type 1 pneumocytes, type 1 cell. यहाँ पे जो दूसरा cell type दिखाई दे रहा है, this is type 2 cell. These are alveolar macrophages. This is the blood vessel. This is the capillary. Capillary जो alveolus को surround कर रहा है. In between the capillary and the alveolar wall, there is interstitium. What is known as interstitium. ठीक है. This area is the interstitium. Now, the lining cells of the capillaries are endothelial cell. These are the endothelial cell जो capillary को लाइन करता है एंड दिस इज द एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन. अभी देखते हैं कि एबनॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है. अगर ARDS होता है पेशेंट को तो एल्वेलाई में व्हाट आर द चेंजेस. जो ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल में देयर विल बी एंडोथेलियल इंजरी. ओके, सोलन इंजूर्ड एंडोथेलियल सेल. एंडोथेलियल सेल जब इंजूर्ड हो जाएगा देन what will happen, the lining of the capillary will be distorted. उस टाइम में the neutrophil, these are neutrophils. Neutrophils जो है, neutrophil will migrate from capillary into the interstitium. ठीक है, capillary से interstitium में जाएगा. This is the migrating neutrophil. Interstitium में जाने के बाद what neutrophil will do? Neutrophil, it will get activated and it will cause a release of number of inflammatory mediators. Cytokines वगैरह रिलीज करेगा and then there will be inflammation, inflammatory cascade शुरू हो जाएगा. प्रोटीएजेस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज सब रिलीज होगा न्यूट्रोफिल से. ठीक है. What happens in the alveolar lining? Alveolar lining जो है उसमें there will be importantly formation of a membrane. Hyaline membrane form होगा. This pink color, pinkish purple color thing is the hyaline membrane. Type 2 pneumocyte usually intact रहता है, इतना इंजरी नहीं होता है. लेकिन type 1 pneumocyte जो है there will be apoptosis or maybe necrotic cell death in case of type 1 pneumocyte. The alveolar macrophages also will get activated. Neutrophil will also enter the alveoli. This is a neutrophil, activated neutrophil. Inside the alveoli, it releases all the chemical mediators like leukotrienes, okay, platelet activating factor, different oxidants like reactive oxygen species, proteases, okay. Release of all this also will cause activation of the alveolar macrophages. Alveolar macrophage जो है, this is the alveolar macrophage. एल्वेलर मैक्रोफेज भी बहुत सारा केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करेगा लाइक इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 18, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा. Many chemical factors will be released and then there will be again lots and lots of inflammation. Okay, and then alveoli के अंदर there will be infiltration by RBCs also. ठीक है, RBC red blood cell भी alveoli के अंदर आ जाएगा. There will be inactivation of the surfactant. Okay, surfactant which prevents the alveolar collapse will become inactivated. ठीक है, and most importantly
Alveoli जो है it will be filled by fluid. Okay, the whole of the alveoli you can see that there is described by the yellowish color. Okay, the yellowish color thing is the protein rich edema fluid. जो protein rich edema fluid है वो पूरा alveoli को fill कर देगा. Now what is happening inside the alveoli? There is fluid filled alveoli. There is presence of number of neutrophils, okay, activated alveolar macrophages, resulting in release of number of cytokines जो inflammatory cascade शुरू करता है. बहुत inflammation होता है alveoli के अंदर. alveolar जो lining है, जो basement membrane है alveolar epithelial cell का, वहाँ पे there will be formation of a hyaline membrane. Okay, because of all this thing, because of presence of hyaline membrane, because of edema fluid inside the alveoli, the gas exchange through the respiratory membrane will be hampered. Gas exchange hampered हो जाएगा, there will be no oxygenation of the blood, so ultimately there will be hypoxia. So this is what happens if we compare the normal alveoli with an alveoli of an ARDS patient. And because of loss of surfactants, since surfactants are lost and they are important for maintaining the alveoli in a patent form, अगर surfactant loss हो जाता है, there will be alveolar collapse, what we call as atelectasis. Okay, atelectasis means alveolar collapse. This results in impaired gas exchange, okay, decreased compliance and increased pulmonary arterial pressure. So this is what is happening. पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर बढ़ेगा, लंग कंप्लायंस डिक्रीज होगा, लंग विल बिकम स्टिफ, ओके, एंड देन गैस एक्सचेंज विल डेफिनेटली बी impaired. Physiological shunting, okay, continued perfusion of non-ventilated alveoli. जो सब alveoli में ventilation नहीं हो रहा है because of edema fluid, because of hyaline membrane, वहाँ पे भी blood circulation तो रहेगा. So there will be a ventilation perfusion mismatch. Physiological shunting will be created because blood supply will be there but there will be no gas exchange. Okay. Microscopically, as I have already mentioned in the image, microscopically there will be widespread alveolar and interstitial edema, inflammation, hemorrhage. Hyaline membrane composed of plasma proteins, fibrin and necrotic debris is the footprint of a pathologic finding of diffuse alveolar damage. This I have already discussed. Diffuse alveolar damage may ultimately there will be formation of a hyaline membrane which will line the alveolus. Okay, ultimately that will hamper the gas exchange. So these are the microscopical findings which I was describing. Resolution. Okay, the ultimate thing is resolution or ultimate phase is resolution of the ARDS. कैसे resolution होता है? जो alveolar fluid जमा होता है, alveolus के अंदर जो fluid जमा होता है, that is removed. Okay, that is removed by 5 ways, 5 routes. एक तो lymphatic से remove होगा, blood vessels से remove होगा, airways, pleural space में जाएगा and some will go into the mediastinum. Mechanism is via activated sodium chloride transporter. प्रोटीन जो है alveolar fluid में प्रोटीन भी removed होगा mostly by intact, okay, and some will be phagocytosed. Okay, intact प्रोटीन भी remove होगा and कुछ जो प्रोटीन है they will be phagocytosed by the probably by the alveolar macrophages and they will be removed from the alveoli. Removal of interstitial fluid in blood vessels or mediastinum, that by 2 ways fluid can be removed from the interstitium, that is via the blood circulation, blood vessels, and it may disseminate into the mediastinum. Stages of ARDS. ARDS का basically 3 stage होता है. Okay, ARDS progresses over a period of a few days and progression जो होता है that follows certain phases. Initial phase is the exudative phase, then followed by proliferative, then followed by fibrotic phase.
Exudative phase, it usually lasts for 0 to 6 days. Exudative phase में क्या होता है? There is accumulation of excess fluid in the lung. Okay. Hypoxemia is maximum at this stage. Hypoxia सबसे ज़्यादा इसी स्टेज में होता है. Some individual they recover from this stage. ठीक है. They may not go into the proliferative stage, fibrotic stage. कुछ individual directly from exudative phase they may recover. Edema का 3 stage होता है. Okay. Stage 1 it is usually drained by lymphatics. Stage 2 interstitial edema होता है. And stage 3 finally there is alveolar edema, means inside alveolus there is accumulation of edema fluid. Proliferative phase. Proliferative phase starts after the exudative phase and it lasts from 7 to 21 days. Proliferative phase में there will be, as the name suggests, proliferation. Okay, proliferative. There will be proliferation of the connective tissue. Mainly there will be activation of fibroblast. Fibroblast का proliferation होगा. Fibroblast का activation होगा, and these activated fibroblasts in the later stage will result in fibrosis. Fibroblast का activation होगा and these fibroblasts will ultimately result in formation of fibrosis. Okay. This stage is also termed as stiff lung or shock lung. ठीक है. जो stage proliferative stage है इसको stiff lung भी बोलते हैं. क्यों स्टिफ लंग? बिकॉज कंप्लायंस बहुत डिक्रीज हो जाता है. अदरवाइज लंग इज ए कंप्लायंट ऑर्गन. उसके मीन्स लंग जो व्हेन वी इनहेल, ओके, लंग कैन एक्सपैंड. व्हेन वी एक्सहेल लंग कैन, इट कैन डिफ्लेट. तो इसको कंप्लायंस बोलते हैं. बट इन केस ऑफ ARDS ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिव फेज लंग बिकम्स स्टीफ. द एक्सपांशन एंड डिफ्लेशन कैपेसिटी ऑफ लंग्स आर लॉस्ट. ओके. And this is also known as shock lung. There will be abnormal enlargement of the air spaces, alveolar spaces, and fibrotic tissue are increasingly apparent. क्योंकि fibroblast का activation होता है, proliferation होता है at this stage, and ultimately there will be so much of fibrous tissue formation. Lastly, fibrotic phase. Fibrotic phase शुरू होता है after 21 days. Okay. While मेनी पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट ARDS के रिकवर कर जाते हैं लंग फंक्शन विदिन 3 to 4 weeks आफ्टर द पल्मोनरी इंजरी. सपोज पेशेंट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लंग इंसल्ट होता है, उसके बाद पेशेंट अगर ARDS डेवलप करता है तो विदिन 3 to 4 weeks ऑफ द प्राइमरी इंसल्ट, इनिशियल इंसल्ट, पेशेंट रिकवर कर जाता है. सम पेशेंट्स, ओके, बट सम ऑफ देम they enter the fibrotic phase. ठीक है. जो लोग फाइब्रोटिक फेज में जाते हैं, फाइब्रोटिक फेज में एंटर करते हैं, उनको एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस होता है लंग में. एल्वियोलर डक्ट एंड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होता है. इंटिमल फाइब्रोप्रोलिफरेशन इन द पल्मोनरी माइक्रो सर्कुलेशन होता है. ठीक है. पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी वेसल्स में, वॉल में, ओके, इंटिमा में फाइब्रोप्रोलिफरेशन होता है. कोई भी वेसल वॉल है जो उसका 3 लेयर्स होता है. इंटिमा इनसाइड, इंटिमा, मीडिया एंड एडवेंटिशिया. ठीक है. तो इंटिमा जो है, इंटिमा, ओके, सपोज दिस इज इंटिमा, देन दिस इज मीडिया, ओके, एंड आउटर पोर्शन इज एडवेंटिशिया. 3 लेयर. सो इनसाइड का जो लेयर होता है, इंटिमा जो होता है, देयर इज फाइब्रो प्रोलिफरेशन ऑफ द इंटिमा. इंटिमा में फाइब्रो प्रोलिफरेशन होने से क्या होता है? देयर विल बी इंक्रीज इन पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस. फाइब्रोसिस हो रहा है मीन्स देयर थिकनिंग इन फाइब्रोसिस होगा. दैट मीन्स द आर्टरी, द वेसल ऑल्सो विल बिकम काइंड ऑफ स्टिफ. तो स्टिफनेस आ जाएगा वेसल में, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, विच विल अल्टीमेटली लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन. ओके. Varying levels of residual fibrotic changes remain. अगर पेशेंट फाइब्रोटिक स्टेज के बाद ठीक भी होता है, स्टिल कुछ फाइब्रोटिक चेंजेस जो है that will persist for lifelong. Okay. The progression of ARDS by various phases.
Just now I was describing it. It is a diagram illustrating the time course from the development and resolution of ARDS. Exudative phase is notable for early alveolar edema. I have already said exudative phase generally lasts from 0 to 6 days. Okay, this is the exudative phase. Okay, this is the exudative phase. Exudative phase में alveolar edema is noticeable, early alveolar edema होता है, and this is the phase when the gas exchange is maximally impaired. Around, like suppose around day 7 or 8, there will be formation of hyaline membrane. Proliferative phase, after the day 6 or 7 starts the proliferative phase. Proliferative phase lasts up to 21 days. Okay. There will be proliferation and activation of the fibroblast, interstitial inflammation होगा. After the proliferative phase, after 21 days, what happens? There will be fibrotic phase. नाम से पता चलता है fibrotic phase means there will be fibrosis in various parts of the lung. In various tissues of the lung there will be fibrosis. So यही है जैसे ARDS progress करता है over a period of time. But some patients, they will improve, okay, from the exudative phase they will go on improving, and some will enter the proliferative phase and then fibrotic phase. ARDS is actually an emergent condition, okay, it is a medical emergency because if untreated, अगर हम treatment नहीं करते हैं ARDS, the patient will directly go into respiratory failure and it may ultimately lead to death also. So ये बहुत important है कि हम ARDS के बारे में अच्छे से we should know about ARDS so that we can save some lives. Coming to the clinical features, okay, as I said, the presentation is dramatic. The onset is acute, okay, within 1 week of the direct or indirect insult to the lung, the patient will develop ARDS, okay, very fast development of respiratory distress. Usual manifestation जो क्या क्या होता है ARDS में? Development of acute dyspnea. Dyspnea means shortness of breath. Development of acute shortness of breath within 7 days of an inciting event. Hypoxemia which is resistant to oxygen therapy. बाकी कंडीशन में क्या होता है? अगर पेशेंट को हाइपोक्सीमिया है, हाइपोक्सिया मीन्स reduced oxygen level in blood. Okay, hypoxemia. अगर ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो रहा है, देन इफ वी गिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेशन करते हैं पेशेंट को, देन ऑक्सीजन लेवल विल कम अप. लेकिन इन दिस कंडीशन इट इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीजन थेरेपी. क्यों रेजिस्टेंट क्यों है? बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ हाइलाइन मेम्ब्रेन. यू हैव ऑलरेडी सीन हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म होगा एल्वियुलर लाइन, एल्वियुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में. ठीक है, एंड देयर विल बी edema fluid inside the alveolus. Alveolus के अंदर fluid है, then formation of a membrane over the alveolar lining. तो there will be no exchange of the gas. तो अगर हम ऑक्सीजन दे भी रहे हैं पेशेंट को, it will not reach up to the blood because of absence of gas exchange in ARDS. So it is very difficult to treat a patient of ARDS. Tachypnea. Tachypnea means increase in respiratory rate. Normal respiratory rate is in between 20 to 40 breath per minute. When it is for an adult, okay, when it is more than 14, we call it as tachypnea, increase in respiratory rate. Tachycardia, increase in pulse rate, heart rate. If heart rate is more than 100 per minute, we call it as tachycardia. Patient will have cyanosis. Now, what is cyanosis? Cyanosis is the bluish discoloration of the skin and mucous membrane. Cyanosis कब होता है? When there is increased amount of reduced hemoglobin, means increased amount of deoxygenated hemoglobin or reduced hemoglobin. तो यहाँ पे ARDS में क्या होता है, पेशेंट को ऑक्सीजनेशन नहीं होता है. ऑक्सीजनेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन विल बी रिड्यूस. डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा पेशेंट को
अगर डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल मोर देन 5 ग्राम पर डेसिलीटर होता है, in that case patient develops cyanosis, bluish discoloration of skin and mucous membrane. ठीक है. Restlessness because of hypoxia, okay, less oxygen reaching to the brain, the patient will develop restlessness, confusion, disorientation. These are because of reduced oxygen delivery to the CNS. Hypertension हो सकता है if there is adrenergic drive. If hyperadrenergic state होता है, then there may be hypertension because as a result of stress response. Or patient may come into shock also. In case of shock, there will be systolic blood pressure will be SBP, systolic blood pressure will be less than 90 millimeter of mercury. On examination, patient को examine करते हैं. On auscultation in the lung, there will be bilateral fine crepitation. Crepitation is one of the added sound in the lung. हम जब lung auscultate करते हैं, we look for breath sound, okay, normal breath sound, and then we look for certain added sound. So crepitation is one of the added sound which signifies there is involvement of the lung parenchyma in the disease process. Crepitation, it's like a bubbling sound, okay. Only if you listen to it, you will remember it. Otherwise, explaining it is difficult. जब सुनोगे आप लोग तब पता चलेगा what is crepitation, exact sound of the crepitation. Why it is produced? It is produced when the air it passes through the fluid filled alveoli. ठीक है, alveoli में fluid है ARDS में. तो जब air, when someone takes inspiration, वो जब एयर जाता है अंदर, एयर जब alveolus से पास करता है, fluid filled alveolus, there may be some bubbling sound like crepitation. Other manifestation of the underlying cause, जो भी cause है ARDS का, may be a direct lung injury, may be an indirect lung injury, that manifestations also we should seek for. ठीक है, क्योंकि underlying cause भी हमको treat करना है. ऐसा नहीं कि हम बस ARDS का मैनेजमेंट करेंगे और बाकी जो अंडरलाइंग कॉज है हम छोड़ देंगे. नहीं, अगर बाकी अंडरलाइंग कॉज इफ वी आर नॉट ट्रीटिंग, देन पेशेंट विल नॉट इम्प्रूव डेफिनेटली. डिफरेंशियल डायग्नोसिस. व्हाट कैन बी डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ARDS? जो भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, वी शुड कीप इन माइंड दैट इट शुड बी एन एक्यूट प्रेजेंटेशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस DDs for ARDS is cardiogenic pulmonary edema. ठीक है, pulmonary edema हो रहा है, lung is getting filled with fluid, but that is because of cardiac problem. Diffuse pneumonia. Diffuse pneumonia है patient को, तब भी patient will present with like dramatic symptoms of dyspnea, shortness of breath, but the patient may have fever also along with it. Alveolar hemorrhage. For some reason, if there is hemorrhage inside the lung, inside the alveolus, the patient may present with symptoms like mimicking ARDS. Less frequent causes जो हम देखते हैं but less frequently. The differential diagnosis are acute interstitial lung disease, ILD. Okay, ILD stands for interstitial lung disease. So acute interstitial lung disease, hypersensitivity pneumonitis, radiation pneumonitis, okay, bilateral lower lobe atelectasis. Atelectasis means collapse of the airways. Okay, so if there is bilateral lower lobe collapse, the patient may also present like ARDS. Massive pulmonary embolism. Massive pulmonary embolism also has a dramatic presentation with shortness of breath, tachycardia, tachypnea, maybe chest pain. Okay, the patient will present with acute onset breathing difficulty. Investigations. How we diagnose a case of ARDS. Just keep in mind that taking a good history and a good physical examination can really hint us towards the diagnosis of ARDS. Investigation क्यों करेंगे तब? Investigation we will do to support our diagnosis which we have made from history and physical examination.
in every classes for every disease I am stressing on history and physical examination because it is a well known fact that अगर हम अच्छे से history लेते हैं, अच्छे से physical examination करते हैं, we know about the disease, we know how to take the history and how to do physical examination, then many of the time we will be able to reach a complete diagnosis of the patient. Investigation तो करेंगे हम just to support our diagnosis, or if we want to rule out some other diseases, or if we want to find out कि कुछ comorbidities है कि patient को या फिर कुछ complications develop हुआ है कि नहीं. For that reason we do investigation. Chest X-ray in ARDS. Chest X-ray में क्या रहेगा ARDS में? As I said, ARDS is a bilateral involvement. दोनों लंग इन्वॉल्व होता है ARDS में. तो अगर हम chest X-ray करते हैं, there will be bilateral lung infiltrates, diffuse. Okay, it will not be localized. There will be diffuse infiltration in the bilateral lung field, and it will be extending up to the lung margins. CT scan हम कर सकते हैं. CT scan is usually more informative. But the only thing is that CT scan सभी centers में available नहीं हो सकता है. CT scan has a high exposure to radiation और CT scan costly भी है. ठीक है, comparing to chest X-ray, CT scan is very much costly. It has high radiation exposure. Drawback. Okay, edema may not be visible until lung water increases up to 30% and even up to 12 hours after the onset of dyspnea. So imaging में हम miss भी कर सकते हैं up to 12 hours of the onset of symptoms. Now this is a typical chest X-ray of a patient with acute respiratory distress syndrome. This is a chest X-ray AP view. It is in the exudative phase. Okay, the initial phase of ARDS, exudative phase. There is bilateral opacity. Okay, both the lungs are involved. You can see the involvement is diffuse. No part of the lung is paired. Okay, पूरा lung में involvement है दोनों side में. We can see the whitish infiltration, right? I hope you can appreciate the whitish infiltration in both the lung field everywhere. Bilateral opacity is consistent with pulmonary edema that can be difficult to distinguish from left ventricular failure. अगर पेशेंट को कार्डियोजेनिक pulmonary edema है तो भी उसका पिक्चर भी it will almost be like this. लेकिन the patient may have cardiomegaly also in the chest X-ray in case of cardiogenic pulmonary edema. ठीक है, प्लस अगर cardiogenic pulmonary edema पेशेंट को हम सस्पेक्ट करते हैं, then we will go for an echocardiogram to find out if there is any cardiac abnormality. Next, this is a CT scan image, computed tomography image of a person with ARDS. ये भी exudative phase में ही है. ठीक है, in the exudative phase of acute respiratory distress syndrome, जहाँ पे हम pulmonary edema देख सकते हैं. Okay, alveolar edema and atelectasis. Okay, both the lung fields are involved. There is bilateral involvement, okay, which is very significant for ARDS. Bilateral involvement होगा, involvement starts from the lower zone. You need to keep in mind that. ABG. ABG stands for arterial blood gas. So ABG analysis means arterial blood gas analysis. क्या क्या information हमको मिल सकता है from arterial blood gas analysis? We will know about the hypoxemia, the level of hypoxemia, okay, and we will be able to grade. शुरू में मैं बोल चुकी हूँ how to grade the severity of hypoxemia with the help of a PaO2 and FiO2 ratio. PaO2 क्या है? PaO2 is the kind of oxygen level in the blood. Okay, what is FiO2? FiO2 is the oxygen level in the inspired air. जो हम इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन में जो एयर लेते हैं उसका ऑक्सीजन परसेंटेज कितना है. ओके,
सो ब्लड का ऑक्सीजन लेवल एंड जो हम इंस्पायर कर रहे हैं उसका ऑक्सीजन लेवल, ओके, उसका लेवल देख के हमको रेशियो करके हमको पता चलेगा द लेवल ऑफ हाइपोक्सीमिया. Respiratory alkalosis. Initially there will be respiratory alkalosis. However, अगर ARDS is because of sepsis, क्योंकि सेप्सिस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है पेशेंट को, ठीक है, तो जब पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तब देयर शुड बी अ कंपेंसेटरी रेस्पिरेटरी alkalosis. So, however, if ARDS is due to sepsis, metabolic acidosis with or without respiratory compensation. As the condition progresses, जो जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है कंडीशन, वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी बढ़ता है पेशेंट का, ठीक है. नाउ पेशेंट हैज टू वर्क मोर टू टेक ब्रेथ और टू ऑक्सीजनेट हिमसेल्फ. ब्रीदिंग इंक्रीजेस एंड PCO2 begins to rise. PaCO2, okay, PaCO2 जब rise होता है, that means the level of carbon dioxide is getting more. Carbon dioxide जब बढ़ जाता है, then carbon dioxide is inside our body, it is converted to carbonic acid. Carbonic acid में convert होता है means the patient ultimately develops respiratory acidosis. तो ABG analysis करके हमको ये सारे information मिलेगा, because from ABG basically we will get to know what is the pH. pH gives us an idea about whether there is acidosis or alkalosis. ठीक है. Normal pH is between 7.35 to 7.45. What is the PaCO2 level? We'll come to know. Okay. Then average PaCO2 level is around 40. What is the bicarbonate level? Okay. Average bicarbonate level is around 24. The range is from 22 to 26. So these are the important information we'll get to know from arterial blood gas analysis, ABG analysis, or we can decide the acid-base disorder in a patient of ARDS, because we need to treat accordingly. We need to correct the acid-base disorder. Bronchoalveolar lavage, shortly known as BAL. ब्रोंकोएल्वुलर लवाज का फैसिलिटी सारे सब सेंटर्स में नहीं होता है, ओके, नहीं हो सकता है, बट इफ इट इज देयर इट इज द मोस्ट रिलायबल टेस्ट टू कंफर्म और एक्सक्लूड ARDS. अगर हम ब्रोंकोएल्वुलर लवाज फ्लूइड जो है उसको एग्जामिन करते हैं, नॉर्मली न्यूट्रोफिल रहता है बट इट विल बी लेस देन 5%, ठीक है, नॉर्मली. लेकिन अगर ARDS पेशेंट में देखिए, then the neutrophil will be up to 80%. Okay, such a huge increase in neutrophil content in the bronchoalveolar lavage fluid. Lavage fluid will be rich in protein and it is the evidence of inflammation. Okay, lavage fluid हम एग्जामिन करते हैं तो इसमें there will be increased amount of neutrophils and it will be rich in protein, which will help us in the diagnosis of ARDS. When protein in lavage fluid expressed as a fraction of serum protein concentration, ठीक है, lavage fluid protein and serum protein का ratio हम देखते हैं तो if it is less than 0.5, it indicates hydrostatic edema. That means it is usually because of cardiac cause, cardiogenic edema. If it is more than 7, it indicates lung inflammation. So, if it is more than 7, the ratio of lavage fluid protein, bronchoalveolar lavage fluid protein and serum protein, if it is more than 0.7, then it is suggestive of ARDS. If it is less than 0.5, it is because of cardiogenic edema. So, this is the importance of bronchoalveolar lavage or BAL. Other investigations, बाकी क्या investigations हम कर सकते हैं? बाकी इन्वेस्टिगेशन में वी कैन डू ब्लड काउंट, रूटीन ब्लड काउंट कर सकते हैं. वी मे गेट आइदर ल्यूकोपीनिया और ल्यूकोसाइटोसिस. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रहेगा अगर पेशेंट DIC डेवलप करता है. व्हाट इज DIC? DIC is one of the complication of ARDS. DIC stands for disseminated intravascular coagulation.
Okay, disseminated intravascular coagulation है तो there will be consumption coagulopathy. As the name suggests, disseminated intravascular coagulation means जगह जगह पे blood vessel में there will be clot formation. Okay, अगर there is so much of clot formation in various areas in our body, तब there will be consumption of all the platelets in the clot formation which will result in thrombocytopenia. DIC जो है ये एक dreaded complication है of ARDS. Patient may die because of DIC. Renal function test, liver function test deranged होता है, acute tubular necrosis हो सकता है patient को as a result of infection and hepatocellular injury हो सकता है, okay, in ARDS. Cytokine levels are elevated because inflammatory process is going on in the body. So interleukin 1, 6, 8 will be elevated. Interleukin 6 level is specifically important for ARDS. Procalcitonin is a marker of infection. Basically, it is a marker of sepsis. So if we are thinking that the underlying cause of ARDS is sepsis, तब हम procalcitonin करके confirm कर सकते हैं कि patient को sepsis है या नहीं. Von Willebrand factor and plasma angioprotein 2, they are marker of impending ARDS with non-pulmonary sepsis. ठीक है, अगर पेशेंट को किसी और जगह में इन्फेक्शन है, not because of pulmonary infection, sepsis source is somewhere else other than lungs, और इस कंडीशन में अगर von Willebrand factor and plasma angioprotein 2 ये दोनों पॉजिटिव है, that means patient is going to develop ARDS soon, impending ARDS, okay, and it has a very poor outcome. Okay, if we are confused that if it is a case of cardiogenic pulmonary edema or it is because of ARDS, we can go ahead and do the cardiac biomarkers. For example, BNP. BNP stands for brain natriuretic peptide. BNP, brain natriuretic peptide. If BNP level is less than 100, heart failure is unlikely. If BNP level is more than 500 picogram per ml, then heart failure is likely and probably the pulmonary edema is as a result of cardiogenic edema. Echocardiography करना है हमको to exclude cardiogenic pulmonary edema. Complications. ARDS का complication क्या क्या हो सकता है? There are certain common complications we see and less common complication भी हो सकता है. Okay. Nosocomial pneumonia is one of the complication of ARDS. Barotrauma, SARS and MODS. Nosocomial pneumonia क्यों होगा पेशेंट को? पेशेंट को ARDS है and in most of the cases of ARDS we will have to mechanically ventilate the patient. पेशेंट को वेंटिलेशन का ज़रूरत होगा. अगर हम पेशेंट को mechanically ventilate कर रहे हैं, there is always a high chance of development of ventilator associated pneumonia or hospital acquired pneumonia. इसीलिए पेशेंट को नोसोकोमियल न्यूमोनिया होने का चांसेस रहता है. बैरोट्रोमा क्यों होगा? अगर हम पेशेंट को मैकेनिकली इंट्यूबेट करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल विद द प्रोटोकॉल ऑफ mechanically ventilating a patient of ARDS. Otherwise, if you are not following the protocol, there may be chances of barotrauma. Okay. What is SIRS? SIRS stands for Systemic Inflammatory Response Syndrome. So, as a result of ARDS, there will be a systemic inflammatory response syndrome and patient may go on to develop MODS. What is MODS? MOD is multi-organ dysfunction syndrome. Okay. So, these are the common but dreaded complications of ARDS.
अदर कॉम्प्लिकेशंस कैन बी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी. अगर हम पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन also has some side effect. Oxygen can also cause toxicity. Though we live on oxygen, but excess concentration of oxygen is not good. Stress ulcer. Patient may develop stress ulcer as a result of acute stress in case of ARDS. Tracheal ulceration हो सकता है patient को. Deep vein thrombosis. Okay, likely because ARDS patient जो है जिनको हम ventilate कर रहे हैं, those group of patients will be non-ambulatory for a long time. They'll be lying on the bed. So अगर ambulation patient का नहीं होता है ठीक से, patient is non-ambulatory, तब patient को deep venous thrombosis होने का chance रहता है. और अगर patient को deep venous thrombosis होता है, then there is a good chance that patient will develop pulmonary embolism. मीन्स लोअर लिम्स में जो थ्रोम्बोसिस होता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, दैट थ्रोम्बस विल गेट डिसलॉज्ड एंड इट विल गो इनटू द lungs, resulting in pulmonary embolism. Again, one of the dreaded complication of ARDS. Pressure sores. Definitely we need to take care of pressure sores which may develop because of prolonged lying down on the bed. Pressure sore जैसे sacral region में हो सकता है, most commonly sacral region में होता है because of continued pressure in that area. और sometimes हम देखते हैं कि hill region में भी patient को pressure sore हो सकता है.